Hi, dear friends. Welcome to the ZipGrid family. On your first day here in the ZipGrid family, I think it's important that you understand some of the values that are important for us, what you can expect in this new organization that you have just joined called as ZipGrid. So here are some of my thoughts, and my name is Arun Rao. I'm Director Knowledge Services uh, in ZipGrid, and I manage operations, training, and marketing strategy in the company. So once again, a warm welcome to ZipGrid. Let me share some of my thoughts with you, and I hope you find these useful. Uh, your journey as a society management professional starts here, right? So there are a lot of you who might also have experience of having been a society manager, but being part of ZipGrid is different. And let's just try and see how it is different. हम अलग कैसे हैं जरा ये समझते हैं. So first things first, why ZipGrid, right? It's important that you've joined ZipGrid as an organization. You should know why it is such a good organization, why you should be a part of ZipGrid. So ZipGrid is the leading company in the society management space. हमारे जैसा कोई और कंपनी है ही नहीं. लोग हैं जो छोटी छोटी गली नुक्कड़ में होते हैं जो सोसाइटी मैनेज करते हैं, या फिर ऐप वाले कंपनीज हैं जो सिर्फ ऐप देते हैं, सोसाइटी मैनेजमेंट में अपना हाथ नहीं डालते. So ZipGrid is the leading company in the society management space with more than 400 societies as on September 2021. More and more societies prefer a full stack outsourcing rather than piecemeal. इन अदर वर्ड्स सोसाइटीज ये नहीं चाहते कि भाई मैनेजर हम रखें, ऐप कोई और दे, लॉयर कोई और हो, अकाउंटिंग कोई और हो. सो कस्टमर्स वांट कि कोई ऐसी कंपनी हो जो सारी चीजें एक ही जगह पे दे सके. समवन हु कैन गिव द मैनेजर, द अकाउंटेंट, द लीगल एडवाइस, कंप्लायंस, ऐप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड दैट्स व्हाई ZipGrid is such a preferred vendor. ZipGrid has a track record of growing its people and creating a career for them. A lot of our employees, we are nearly 8 years old. A lot of them joined 8 years back, and now they are head of operations and very very senior people in this company. तो वो grow करे हैं इसी company में. And finally, we are on our way to becoming global. ZipGrid सिर्फ बम्बई तक ही सीमित नहीं है. Soon we are going national. We are also already present with some of our services in places like Sri Lanka, Vietnam, Thailand, etc. We are really going global. So that is the reason why ZipGrid is such a great company. और आप सबको ये career opportunities मिलेगी, ना सिर्फ सोसाइटी मैनेजर बन के एक सोसाइटी में आप रहोगे, बल्कि आप ग्रो कर सकते हो, करियर बना सकते हो यहाँ पे. तो करियर करियर ये मैं बार बार बता रहा हूं, तो जरा समझे कि भाई करियर है क्या. व्हाट इज दिस करियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, you start as a society manager. What could happen next is that you could end up managing a bigger society, maybe a federation, multiple societies together as a senior society manager. Or if your interest is in compliance, you can go into the compliance stream. If your interest is finance, you can go into the finance function. But having gone there, you could then go on to become a lead manager or an account lead in the company. You could also become a cluster head, actually managing an entire region in a city. And finally, you could end up becoming general manager operations. And that's not the end of it. You could grow even more. So in other words, ZipGrid जैसी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह एक ही लेवल पे ज्वाइन किया और वही चलता रहेगा. You could keep on growing and your career keeps your income, your salaries, your lifestyle, how you can keep your family, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, etc. All this can become a possibility if you stay around and grow with the company. But one thing
that we are really obsessed about in our company is the customer. In fact, customer obsession is one part where I want to spend a little time today. कस्टमर ऑब्सेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. ऑब्सेशन का मतलब ये है कि शिद्दत या जुनून, बस मुझे कस्टमर को खुश रखना ही है किसी भी हाल में. ये जो अंदर से आवाज आती है उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं. तो ये कस्टमर ऑब्सेशन हम में है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू बी. So what does it mean to be obsessed with a customer? First, we should understand this concept called as moment of truth. Moment of truth का मतलब क्या है? Number one, every time a customer interacts with you, जब भी कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करता है, शायद आपका ईमेल पढ़ रहा होगा, आपका व्हाट्सएप मैसेज देखा होगा, आपसे बात कर रहे होंगे या फिर फोन कॉल कर रहे होंगे. इन एनी वन ऑफ दीज केसेस, एवरी टाइम देयर इज सम इंटरेक्शन, वो एक ओपिनियन बना रहे हैं कि ये दिस पर्सन ऑपोजिट मी, ये सही है या सही नहीं है. सो हमेशा ओपिनियन या जजमेंट जो है ये चालू रहता है दिमाग में. तो हम क्या चाहते हैं कि आपकी ओपिनियन यानी कंपनी की भी ओपिनियन वो फॉर्म कर रहे हैं, ये हमेशा यू नो अच्छा होना चाहिए. ही शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट यू एंड योर कंपनी. तो इसको हम मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहते हैं कि हर टाइम जब कस्टमर इंटरेक्ट करता है तो उसको कभी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि उसे लगे यार मजा नहीं आ रहा है. ही शुड ऑलवेज फील वाह क्या सर्विस है यार, क्या काम है इनका. एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय मोमेंट ऑफ ट्रूथ. सो द क्वेश्चन इज, ये ओपिनियन वो फॉर्म कैसे करते हैं और हम इसको कैसे पॉजिटिव ओपिनियन बनाए. हाउ डू वी मेक श्योर दैट द ओपिनियन इज पॉजिटिव? So let me talk about the customer obsession behavior, right? So what is the behavior we need to show if you are really obsessed about the customer? आप शिद्दत से कस्टमर को खुश करना चाहते हो, डिलाइट करना चाहते हो, तो then what is the kind of behavior you would show? Number one, ownership, and I'll describe each one of these in detail. Number two, listening. Number three, quality. नंबर फोर, स्पीड. एंड नंबर फाइव, कम्युनिकेशन. ये 5 बिहेवियर्स हैं जो अगर हम दिखाते हैं तो कस्टमर ऑब्सेशन जो है वो उभर के सामने आता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर. पहले हम ओनरशिप की समझते हैं. ओनरशिप का मतलब, डोंट जस्ट डू योर वर्क. मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ये कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, आई हैव डन माय वर्क, बस अब और प्रोसेस मैंने फॉलो कर लिया, अब उनके ऊपर है. अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. एक हमारे मैनेजर थे जिन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाई थी और वो जाना था टू द मेंबर्स. तो साइन ऑफ जरूरी है, मैनेजिंग कमिटी से उन्होंने मेल में डाला. मैनेजिंग कमिटी ने शायद मेल नहीं पढ़ा, तो ये मैनेजर ये कह सकते थे कि अरे मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने मेल भेज दिया. वो मैनेजिंग कमिटी को मेल पढ़ के डिसाइड करना चाहिए था कि आगे क्या करना है, आगे और लोगों को भेजना है वगैरह वगैरह. But when he didn't see a reply from the customer even late in the evening, he knew that this was an urgent email. He really knew it was urgent. So he started calling the customer. Now the customer happened to be in a meeting at that point in time, तो उन्होंने इनका कॉल लिया नहीं. He waited in office till 10 and 11 p.m. And that's when the customer finally picked up the call and he said, "Sir, I've sent you a mail. Can you check? It is urgent. It has to go today." The customer was blown. He was so happy, saying, एक मैनेजर 11 बजे तक बैठा है just to make sure an important mail is being read and it is going out to the people. And he was so happy that he actually rewarded the manager next month. Now that is ownership. ये नहीं कहना कि मैंने अपना काम कर दिया है और चले जाओ. There is no excuses and no buts when it comes to ownership. It means you are around till the job is done. That's what ownership means. That's one behavior that we value. The next behavior is listening. Okay. So the fundamental rule of listening is do not assume.
Assume यानी ये मत सोचो कि मुझे पता है ये क्या कहने वाले हैं. And as you can see, I have written there, when you assume, you make an ass of you and me. And we don't want that to happen, right? Ask questions. Sawal pucho so that you understand completely what the customer is trying to say. Listen, listen, listen very, very carefully. Take notes when you're listening. Put yourself in the customer's shoes. ये मत सोचो कि अरे यार ये कस्टमर क्या कि क्यों कह रहे हैं इतना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. थोड़ा समझो, उनके जूतों में चल के देखो. अंडरस्टैंड व्हाट वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड वेयर व्हाट इज द पेन दे आर फेसिंग, दैट इज व्हेन यू रियली लिसन and you've understood what the customer is trying to tell you. Empathize, समझो उनकी बात, and assure them, उनको विश्वास दिलाओ. Tell them that you will make sure things are fine, things are sorted, and you will ensure that the result is there for the customer. Quality. Okay. Okay. This is the डब्बा वाला story. हाँ. अब बम्बई में रहने वाले सब डब्बा वाला तो जानते ही, बम्बई के बाहर वाले भी अभी सब जानते हैं. So did you know that Dabbawala serve 2 lakh tiffins every day? 2 lakh tiffins, 2 लाख टिफिन वो लोगों को देते हैं ऑल अक्रॉस बॉम्बे. अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 99% इज नॉट गुड इनफ. इसका मतलब ये कि सपोज 1% गलती हो गई डब्बा देने में, तो 2 लाख का 1% कितना हुआ? इट्स 2000. 2000 डब्बे गलत लोगों को जा रहा है. यानी इमेजिन करो, वेज वालों को नॉन वेज फूड, जैन खाने वाले को लहसुन प्याज वाला खाना. इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट केओस, राइट? जिसको अगर अपने घर का खाना नहीं मिलता है तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन डब्बावाला इज मेकिंग इवन 1% एरर? 2 लाख में से 2 लाख डब्बे एग्जैक्टली सही जगह पे पहुंचते, सही वक्त पे पहुंचते, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो. नाउ दैट इज ऑब्सेशन फॉर कस्टमर, दैट इज ऑब्सेशन फॉर क्वालिटी. So 99% is not good enough. Double check everything that you're doing, make sure it is perfect, and never compromise. कभी भी, है ना, चलता है, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. चलता है बस, इतना ठीक है. मेक श्योर इट इज परफेक्ट. आप मेमो कर रहे हो तो स्पेल चेक करिए. मेक श्योर इफ इट इज एन एनओसी, आपका कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव से आप चेक करा रहे हो. डबल चेक एंड मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है थोड़ा इसका उल्टा है लेकिन जरूरी है, स्पीड. तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार, अगर क्वालिटी देना है तो स्पीड कैसे कर सकते हैं? फास्ट फास्ट करो और अच्छा क्वालिटी भी करो, ये कैसे हो सकता है? अब तो जानते ही हैं, कुरियर इंडस्ट्री में देखिए क्या हो गया. फर्स्ट वी हैड डीएचएल. Now DHL would take its own sweet time to deliver courier. And suddenly one day you had Vichare Courier who said that I'm going to give same day delivery. DHL and all these professional couriers and all of them, their industry got shaken a bit because Vichare was doing it in one day, less than one day, at a very economical cost within the same city. Next came lockdown के time पे वी फास्ट, आजकल उसको बोर्जो बोलते हैं. So वी फास्ट said that I'm going to deliver in 1 hour or 2 hours. Now the speed, does that mean they can do wrong deliveries because they are doing fast? No, they still have to do the right deliveries. सही पैकेज सही घर पे ही जाना चाहिए और टूटा फूटा नहीं जाना चाहिए, उसको परफेक्ट कंडीशन में ले जाना है. But this has to happen fast. We know the world is getting faster, so we have to do things fast. बाईलॉज के टाइमलाइंस होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग 30 दिन से 60 दिन के अंदर जाना चाहिए वगैरह वगैरह. ये बाईलॉज में लिखा गया है. ये बाईलॉज वाली भाषा जो है ना, ये सरकारी लोगों के लिए ठीक है, दैट इज फाइन ओनली फॉर द अथॉरिटीज. फॉर अस 30 days is too late. Within 48 hours minutes have to go. If it takes longer than that, it is just too late. So we are in the customer service business. We are not bylaws business. So make sure that we are delivering quality work at good speed. And finally,
कम्युनिकेशन, ओवर कम्युनिकेट। ये मत सोचो कि अच्छा मैं कर दूंगा, करने के बाद उनको बताऊंगा वगैरह वगैरह, या फिर मैं काम कर रहा हूं चुपचाप, मेरी काम बोलेगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। This doesn't work in today's world. You have to over communicate. Use email, use WhatsApp, use phone calls, you do personal meetings. जितनी बार हो सके कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, उनको WhatsApp भेजते रहिए, ईमेल भेजते रहिए, मीटिंग्स करते रहिए, फोन कॉल करते रहिए. कीप टॉकिंग टू देम and telling them what you are doing, if they have a problem, what problem do they have, how you can help them, etc., etc. Send all your reports on time. Use whiteboards. ओके, सोसाइटी ऑफिसेज में व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिखना होता है कि भाई एएमसी किसका कभी ड्यू है, डिफॉल्टर्स कौन है, आपका एक्टिविटीज फॉर द डे क्या है. ये भी एक कम्युनिकेशन. अगर कोई मैनेजिंग कमेटी वाला आके देखता है अरे व्हाइट बोर्ड अपडेटेड है और आज के सारे एक्टिविटीज इसने लिखे हुए हैं, तो वो इमीडिएटली इंप्रेस हो जाता है. So you really have to over communicate, and that's the key to great customer service. If they don't know that you're doing service for them, then they don't believe that you're doing service. तो ना सिर्फ सर्विस करना जरूरी है, उसको बताना भी जरूरी है. Therefore I am saying over communicate. Always keep talking to customers. Why am I so many times am I using the word customer? Because remember, they pay our salaries. Yeah. With that, I just want to once again welcome you to the ZipGrid family. Thank you for being patient and listening to what I had to say. All the very best, and see you in training. We have a detailed training where we are going to give you tips about how to deal with customers, how to serve them, how to provide great experience, so on and so forth. So once again, all the best and wish you a great career in ZipGrid. Thanks. Bye-bye.